welcome back to the weekly vlog tour. You were not there. I have a new wheel here, it's all mounted, it's nice and done. Hey, expose मत कर. Such good drivers, I tell you. So morning I've been busy editing and finishing the first vlog. उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें करनी थी तो वो सब मैंने करके ख़त्म किया. So you guys probably don't know but मुझे January में ligament injury हो गई थी मेरे ankle में. So I can't really get into very physical exercises and strength training and everything. So I have to slowly ease into it. तो आज से शुरू कर रहे हैं. अभी तक मैं कुछ खेल वेल भी नहीं पा रहा था. तो आज से शुरुआत हो रही है. And the first day all they've asked me to do is take a 40 minutes brisk walk. So that's what I'm gonna go do. I'll probably walk around in the building only because मेरे को रोड पे जाने का ज़रा भी मूड नहीं है अभी. Let's go get ready for the walk. So हम लोग झील के यहाँ पे अभी डिनर के लिए जा रहे हैं with her parents and my parents are also coming, so all of us are gonna have a nice meal dinner together. उसके पहले झील को आईब्रो कराने थे. So if you can see वहाँ पे एक सैलून है जहाँ पे वो गई हुई है. She is getting her eyebrows done because कल उसका एक वैसलीन का एक शूट है, so she has to be all ready for it. And yeah, I'm sitting in the car waiting for her. You were not there. तो इतनी देर से क्या कर रही थी? I went and got medicine. यो गुड मॉर्निंग. सो आज काफ़ी जल्दी उठ गए हम लोग. सुबह सुबह झील गई जिम में. आई डिसाइडेड टू डू ऑल माई वर्क मीटिंग्स एंड कॉल्स एंड व्हाटएवर ताकि ख़त्म कर लूँ बिकॉज आज है झील का एक शूट एंड आई नीड टू हेल्प हर विद इट. उसका आज वैसलीन इज इट वैसलीन और वैसलीन एनीवेज वैसलीन का शूट है एंड आई एम गोना हेल्प हर विद इट. आई विल प्रॉब्ली बी रिकॉर्डिंग सम BTS ऑफ द शूट एज वेल बिकॉज you guys will also get to see the difference between my collab videos and Jeel's because मेरे उसमें थोड़ा मैं नहीं बोलूँगा कि कम effort लगता है. I put in a lot of effort into all of my videos whether depend regardless of the budget and the brand, but with Jeel's videos of course it's a bit higher on the budget and the production side. So this morning I woke up before my work calls and all I did upload the first weekly vlog which is crazy because last week it was just an idea and now it's there on YouTube. So I don't know if you guys have seen it but जाके देखो बताओ कैसा लगा. I know उसकी क्वालिटी थोड़ी कम थी because मैंने एक्शन कैम से रिकॉर्ड किया था indoors which is something that I learned from and this week we're gonna do it from the phone. अगर बाहर लो लाइट या इंडोर शॉट्स है तो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करूँगा. आउटडोर्स के लिए एक्शन कैम इज़ ग्रेट, इट गिव्स ग्रेट क्वालिटी बट या इंडोर्स इट डजंट रियली डू वेल. झील को भी शायद ज़्यादा देखोगे बिकॉज वी गॉट अ फ्यू प्लान्स. शी इज़ गॉन टू द पार्लर. कल वो आईब्रोज जब कराने गई थी आईब्रो शॉप क्या होता है भाई, पार्लर गई थी तभी वो उधर उन लोग हो गया था ख़त्म दिन के लिए सो दे couldn't get it done. But yeah, today she's gone after the gym so she's gonna do that, come back home, get ready and then we're gonna start shooting. So yeah, it's gonna be a fun day. Then let's get started. Jheel is home and we're about to start her shoot. As you guys can see, the camera's out, the light is out, the sofa is removed so that she can shoot here with a plain background. Jheel ki shoot karenge, then piece it together a little bit. She wants to try some cool transitions and all, so we'll probably try that. And I'll record some of it in the BTS and then you guys can see कि कैसे जाते हैं shoots. पैसा दूंगी मैं ये ब्लॉग में आने का. नीलू मनी, नीलू और जो मनी. You have all my money. And then put the green here. And you can take it back and you can just. So it'll be like, and then you just talking about it. You'll have it in your hand when you're talking to the teenagers. Sunscreen. अभी अभी
वीडियो शूट हो चुका है झील का and now she's piecing everything together. I'm learning editing from the best. Yeah, she's learning how to. I'm the best husband in the whole wide world. वहाँ पे उसके वो edit piece कर रहे हैं, so when she's done with like the base cut, उसके बाद फिर I'll take over and then we'll see what they say. Are you happy with the video though? Yes, I think so. We're fine. I think that's the first time we've shot a video like that for you, like with the cuts and the transition. Yeah, I was just feeling that, I don't know, like I was feeling inspired. Good. Let's see how it turns out. Okay, so झील का वीडियो एडिट हो चुका है वैसलीन वाला, हम लोगों ने भेज दिया है आगे एंड आज का उस पे ही चला गया पूरा दिन शूटिंग एडिटिंग में एंड आई हैड टू प्रिपेयर लाइक अ फुल comparator sheet for my work, so that also I finished and lot of work I've been doing today, तो काफी कुछ हो चुका है. So yes, अभी finally gonna chill for a bit. I don't know what the plan is. अभी देखते हैं. Maybe we'll go see my parents or just Jeel and I will hang out for a bit. Edit is done. Send forward. Just waiting for approval now. And I think it's a pretty good edit. When it goes live on her Instagram, तुम लोग देखोगे काफी अच्छा है. And I'm very proud of it. And so both of us are. So अभी खाना ना हो चुका था हम लोग का. And mom dad के साथ we had dinner. And then उसके बाद actually पापा को गाड़ी में पेट्रोल भरवाना था. तो मैं और झील निकल पड़े. काफी ट्रैफिक मिली. पेट्रोल पंप तो एक्चुअली हम लोग के घर के सामने जो पेट्रोल पंप है वो भी बंद पड़ा हुआ है फॉर सम रीजन. आई थिंक दे रन आउट ऑफ पेट्रोल और समथिंग. Possible? बट यार तो वी हैड टू गो टू द नेक्स्ट पेट्रोल पंप और वहां पे भी लाइन थी. बट लकीली फॉर सम रीजन जस्ट हम लोग गए लाइन में लगे और उन्होंने एक नया साइड वाला पंप वो चालू कर दिया तो वी कुड स्किप द लाइन. My face card has a VAT. तुझे देखा भी नहीं निकल में. उन्होंने बस आए वो अपनी ड्यूटी पे आए और उन्होंने चालू किया पेट्रोल पंप और वी लाइक या लेट्स गो स्किप द लाइन इजी. तो बस भरवा लिया पेट्रोल. अब जा रहे हैं घर. फिर हम देखेंगे तस्करी. आजकल अभी हम लोग वो देख रहे हैं शो फिलहाल. बहुत मजा आ रहा है मुझे तो. It's a very fun show. If you guys haven't watched it, check it out. Netflix पे. बस अब लोगों को पता नहीं चलना चाहिए हम कहाँ रहते हैं, इसलिए बाय बाय टाटा, सी यू टुमारो और whatever whenever. Bye bye. What up? Good morning. आज कौन सा दिन है भाई? Today is a Wednesday. Yes. And घर में लाइट चली गई है. There's no electricity in the house, so we're just sitting. There's no Wi-Fi. I'm just walking around recording. Also, I think कोई तो lift में अटक गया. The guards and everybody's outside. So I'm trying not to go and record it because it seems weird. And I think I'm gonna finish all of the unboxing and the SIM upgrades के video that I need to do because जो Conspit ने wheels भेजे they need to get their video soon. They've sent it in December and अभी तक पड़ा हुआ है. Let's see how the day progresses. But for now I'm just gonna get some food and yeah, freshen up. अबे क्या freshen up, क्या food. Light नहीं है, क्या करें? 5 बज रहे हैं शाम के एंड आई हैव बीन बिजी विद अ लॉट ऑफ एडिटिंग वर्क एंड सम क्लाइंट वर्क एंड एवरीथिंग. सो वो सब हो चुका है एंड अभी आई एम वर्किंग ऑन फिनिशिंग द वीडियो. जैसा कि मैंने बोला था, आई हैव टू फिनिश दैट वीडियो फॉर द व्हील फॉर कॉन्स्पिट एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग. सो ये रहा मेरा कैमरा, मैंने सेटअप करके रखा है. द राउंड व्हील इज देयर बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस ब्यूटी. आई मीन लुक एट दिस, इजंट इट अमेजिंग? Wow, I mean देख लो बस इस प्यारी सी चीज़ को. Once we're done with that, I'll put this on the rig, take some shots of that as well. So yeah, that should be it. We're very excited to test this out. अभी तक मैंने use नहीं किया ये वाला. So let's finish this video and then I'll put it on the rig and then we'll get started. So मैंने video ख़त्म कर दिया है of the wheel. As you guys can see, We have a new wheel here. It's all mounted. It's nice and done. The other one's right there. तो ये दोनों का मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है एंड अभी उसके बाद मुझे एक वो PR पैकेज था जिसकी अनबॉक्सिंग करनी थी रेयर एंड कल्ट का. दैट ऑल्सो हैव डन. उसमें ये एक था माउस पैड था मैक्लारन का विच इज़ वेरी कूल. And there was a calendar, a 2026 calendar which was also very cool. Some stickers and fridge magnets and also this. तो यहाँ पे जैसे मेरा मैक्लारन का लगा हुआ है ना, ये वैसे इन्होंने एक कार्लोस साइंस का भेजा हुआ है. This is probably gonna go to Jeel, I think. Let's see if she wants it. Otherwise, I'll put it somewhere. But yeah, big shout out to Rare and Cult for sending me all of this. They are very cool products. फिर खाना खा के रात को निकल गया मैं अपने फ्रेंड्स के साथ धुरंधर 2 देखने. 10:30 बजे का शो. 3:30 बज रहे रात के. I just came back from the movie. धुरंधर 2 देखने गए थे मैं और मेरे दोस्त. It was a fun movie. I mean, it was very action packed. But dude, मानना पड़ेगा लोगों का commitment. Like there were so many people with their grandparents and everything. सब लोग देखने आए थे मूवी, तो commitment तो है यार. Late night मुंबई में मूवी लोग देखते हैं.
I wish the show was a little bit earlier, but मेरे दोस्तों ने late night book किया. But it is what it is. We watched it. I like the first one better. This one was, I mean, there was a lot of action, a lot of music, but काफी लंबी चली. And there were parts which I think weren't necessary at all. You can watch it if you want. There's a lot of hype around it, and it shows how much they've spent on it. So you can go watch it. That's it for tonight. I'll see you guys in the morning. Good morning. It's Thursday today. आज के दिन में सुबह सुबह उठ के मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, अपना काम कर लिया, जल्दी नहा लिया बिकॉज आज पानी जाने वाला है, कुछ काम चल रहा है सोसाइटी में. एंड नाउ आई एम प्रेपिंग द सिमुलेटर एज यू गाइस कैन सी बिकॉज आज हमारा एक वीडियो शूट होना है. मुझे और झील को एक वीडियो शूट करना है. It's for fan code and the video is something to do with track guides. So we're working on that right now. You'll probably see it. जब तक हम लोग ये व्लॉग डालेंगे तब तक वो वीडियो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे आ चुका होगा. सो यू प्रॉब्ली सी इट देन. बट वी बेसिकली डूइंग अ ट्रैक गाइड, बट इंस्टेड ऑफ मी ड्राइविंग, झील इज गोना बी ड्राइविंग एंड आई विल बी कोचिंग हर. तो दैट्स द कांसेप्ट ऑफ द वीडियो. तो बस मैं सब प्रेप करके रख रहा हूँ ताकि फिर जब झील रेडी हो जाएगी सो वी कैन शूट इट, एडिट इट बिकॉज इट हैज टू गो लाइव टुमारो. यहाँ पे लाइन रख. इट्स फाइन. मैंने भी बहुत फंबल किया ये वाले में. सो ये बहुत डांटता है मुझे, बहुत डांटता है. कभी कभी तो मिलता है मुझे डांटने में, वरना तू डांटती है. ही इज अ टफ टीचर. Just like Max's dad wants. And Max won 4 championships. घास पे मत चढ़ा. एक्सपोज मत कर. Good morning. It's 6:30 a.m. I'm not feeling very well. My throat is gone. I have a lot of cough. पता नहीं क्यों हुआ. मैंने कुछ ठंडा ठंडा पिया भी नहीं था. Not feeling 100%, but I woke up early because there's an event today for work. We're setting up a racing simulator at this event for Mumbai Falcons at a film studio. Last night, some boxes आए हैं which I had to go down and take care of, and then now I have to wait for the porter to come to send those boxes there, and then follow them in the car, and go set up the racing sims there. So you'll probably see me over there now. Sida, I'll go shower, have some coffee, have some breakfast, and then grab like कुछ medicine रख लूँगा अपनी. और बस फिर जाएंगे. आज it's gonna be a busy day. Hello, so I'm in my car. इसलिए horizontal camera नहीं है, but we're off for work. So for those who don't know, I work as a sim racing and esports specialist for a company which is based in the Middle East. तो हम लोग Fanatec और Playseat जो products हैं वो इंडिया में लेके आ रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं. These are the only 2 official F1 licensed sim racing products that you can find on the market, and they're finally launching in India. So right now we're still in the early launch phases, and अभी basically हम लोग events काफ़ी करा रहे हैं. So we were set up at MotoJam in Delhi, and today we are setting up a simulator at this event for Mumbai Falcons. जैसा कि मैंने सुबह बताया था, आधा घंटा दिखा रहा है मुझे ट्रैवल टाइम उधर. तो वहाँ पे जाके फिर मुझे वो रेसिंग सिम्स डिसअसेंबल्ड है. बेसिकली एक ही सिम है. इट्स वन ऑफ द पोडियम, द esports F1 esports का सिम रेसिंग रिग है. तो वो डिसअसेंबल्ड है, तो उसको जाके वहाँ पे असेंबल करना है, सेटअप करना है, कॉन्फ़िगर करना है, एंड ऑल नीड्स टू बी डन इन द नेक्स्ट 2 hours. लेट्स सी हाउ इट गोज. सिटी फ्लो वाले ड्राइवर्स, माय गॉड, एक्सट्रीम लेफ्ट लेन टू एक्सट्रीम राइट लेन कटिंग. बाय बाय बाय. Such good drivers, I tell you. And here is the Fanatec Ricco equipment. It came in all of these boxes, so I had to take out, and this is what it looked like once it was assembled. So it's the Club Sport Formula cockpit along with CSL DD Plus wheelbase and the F1 steering wheel. बहुत ही cool product है, बहुत ही cool racing rig है. It is the exact same rig that is being used for Formula 1 esports, and I finally got to assemble one and test one out, so it was very cool. I can't really talk about what the shoot was for or the person who was involved with the shoot. You guys will have to wait for a future video ताकि मैं सब कुछ share कर पाऊँ, because it was kind of top secret and I don't even know if I can show you this footage, so shush. And by the time shoot खत्म हुई और हमने सब disassemble करके सब पैक कर दिया अपने rig का सामान, the entire warehouse was empty. The lights, camera, studio, everything was packed up before we were. हम लोग सबसे last लोग थे जो वहाँ से निकले. Yo, what's up? So the shoot ended at around 8 o'clock. वहाँ से फिर निकल के सब सामान जो भी था, the whole simulator we packed up and sent it back here because tomorrow it has to go back to the warehouse. My throat still feels bad, but काम था, करना पड़ता है. So yeah, we powered through the entire day on just black coffee and finished the entire day. And it's 9:30 and I just came home. अभी बस खाना खाएंगे and I am so dead tired, bro. I don't feel like I'm doing anything. But yes, कल सुबह FP3 है and there's qualifying
qualifying and it's an F1 weekend, so I have to be fully charged for it. Just gonna have food, maybe watch something on TV and then fall asleep because need to get some sleep and recover because I can't deal with this blocked nose and sardi khasi. I hate it. But man, what a day, what a cool day. That was the first time I saw Fanatec Esports, F1 Esports rig and drove on it, and it was pretty cool. Let's see what tomorrow has in store for us. Good night. Good morning. 11 baj rahe. I just woke up like 5 minutes ago. And I am so tired. Like you guys can probably hear from my voice that my throat is completely gone. Like I can barely talk. And yeah, it was a long day of shooting yesterday. But it's F1 qualifying in like 20 minutes. So I'll quickly make some coffee. Nashta lete hain. Kuch to khana padega because I'm very hungry. And then yeah, let's sit down for qualifying. So लंच करके सो गया था मैं because I was not feeling well obviously. And अभी सोने के बाद finally खाना ना खा के सो के नहा धो के I'm feeling a lot better. I'm feeling like थोड़ी बहुत energy आ रही है. But I haven't started editing the vlog at all. तो मुझे वो चालू करना पड़ेगा. जैसे कि तुम लोग देख रहे हो मैंने इधर खोल के रखा है अपना editing software. And then let's see. I'll try to rest as much because कल सुबह race है and I'm going for a screening. So let's see how it goes. For now, let's get this vlog done. So some of the vlog has been pieced up जैसा कि you guys can see in the background. यार 20-21 मिनट का हुआ है. अभी तक मैंने बहुत exactly tight cutting नहीं किया. A lot of things have to be removed. I've just color corrected and placed the footages together to make like a full master footage. And then उसके बाद मैं और cut करके captioning करके text music वो सब कल करूँगा या फिर मंडे को करूँगा. पर यार लोग कैसे बना लेते हैं vlogs? Weekly vlogs within 15 minutes I've seen people do. How do they do it? There's so many things that I add in the vlog. एक तो या तो मैं बहुत ज़्यादा याप करता हूँ. Let me know. I mean, if you guys prefer shorter vlogs like 10-15 minutes one, then I'll try to keep it very short and not yap as much. या फिर अगर 20 मिनट वाले चल रहे हैं तो then that's okay. We'll keep it that way because there's so many things. How do I cut out everything? You guys wanna see how many boxes I have that I need to unbox? Wait, कितने boxes pile up हुए मैं दिखाता हूँ एक second. Look at this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 boxes. Don't even get me started on those. Those we'll talk about later on. Anyways, I think this is probably gonna be it for today. I don't think अभी कुछ और ऐसा मैं करने वाला जिसके रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है. So yeah, see you guys tomorrow morning. It's a Sunday morning F1 race at Japan, and then उसके बाद I have the rest of the day mostly free, so I'll rest up as well as try editing the rest of the vlog and see if I can get something fun to record. So we started off the day with the F1 screening in Juhu at the Nines, and it was a fun race. मेरी favorite team McLaren actually did quite well, so I'm happy. Then I had lunch and came back home. 6:30 के आसपास हो रहा है. सुबह स्क्रीनिंग के लिए गया था. Actually सुबह झील के एक फ्रेंड को मिलने गए थे हम लोग. उसके बाद she went to play badminton and I had gone to the F1 screening जो Nines में थी. Alisha was hosting it. So I went there. It was a lot of fun. काफी interesting race रही. McLaren finally scored some good points. Oscar got a podium, so I'm very happy. So that was that. I came home after eating lunch there around 3 o'clock. And once I was back, थोड़ी देर सो गया था because बहुत तेज नींद आ रही थी. Since we woke up very early. And now I'm just waiting to have some food, probably have an early dinner and go watch a movie. Jheel, I and some of our friends are going to watch Project Hail Mary. So it's Ryan Gosling's new sci-fi film and we were very excited for it. Trailers में तो बहुत ही बढ़िया लग रही है and there's a lot of good reviews around it. तो अभी वो हम लोग देखने जा रहे हैं. शाम को 8 बजे का शो है. So we're gonna go watch that and then come home and then that's it for Sunday. फिर कल सुबह उठ के वापस ये सब clips डालनी है vlog में अभी तक edit जो किया है, and that's gonna be this entire week. It's been a very fun, action-packed, lot of things happening week. Hopefully you guys like this one more than the first one because काफी कुछ नई चीजें की, काफी कुछ extra किया, खाली you know just not talking about the rig and all. And then yeah, let's see what week 3 has in store for us. But yeah, thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed. Like करो, subscribe करो, जो भी करते हैं vlog में. So yeah, take care and see you.